నమస్కారం. నా పేరు శ్రీధర్ రెడ్డి, భారతీయ ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మజ్దూర్ మహాసంఘ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి. మనకి దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో సమస్యలతో ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యవహారం నడుస్తుంది. దీంట్లో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ విధానం వెంటనే అమలు చేయాలి. లారీ యొక్క పరిమితి 15 సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ ఇచ్చినా కూడా 7 సంవత్సరాల నుంచి గ్రీన్ ట్యాక్స్ పేరు మీద అక్రమంగా వసూళ్లు నిలిపివేయాలని మేము కోరుతుంటాం. దాని తర్వాత ఇష్ట వ్యవహారం గత ప్రభుత్వం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డంపింగ్ యార్డులు పెట్టేసి ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు వృధా చేసినప్పటికీ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చి యథావిధి పరిస్థితిని తీసుకొచ్చింది. దీని మీద కొన్ని లక్షల లారీల డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు, లారీ ఓనర్లు లారీ కిస్తులు కట్టలేక చాలామంది మరణిస్తున్నారు. దీని మీద గవర్నమెంట్ వెంటనే ఆ ఇష్టార్థాలను ఎత్తేసి లారీలకి లోడింగ్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఇలాగే ప్రతి టోల్ గేట్ దగ్గర లారీ పార్కింగ్ వ్యवस्था ఏర్పాటు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. राजेंद्र सोनी, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन की तरफ से यहाँ हैदराबाद में आया हूँ। जो भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का 2 दिन का अधिवेशन चल रहा है। इसमें क्या है, देश के ड्राइवरों के लिए कम से कम 35 से 40 करोड़ लोग, इनके बच्चे, इनकी फैमिली जो काम कर रही है इस उद्योग के अंदर, ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। तो इसके ड्राइवरों की चर्चा हुई है, भाई कैसे इनके बच्चों का विकास होए, कैसे इनके लिए हम लोग काम करें, और पूरे देश भर के अंदर एक सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए इनके लिए। और जैसे पुलिस की दिक्कतें हैं ड्राइवर्स को, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, बस ड्राइवर्स हो गए, तो उनको कैसे हल करा जाए भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से। और कई राज्यों के अंदर, स्टेटों के अंदर इनका कल्याण बोर्ड की गठन होने जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, आप राजस्थान हो गया, कर्नाटका में पहले ही है, तेलंगाना में अब घोषणा हुई है, दिल्ली के अंदर भी अभी घोषणा हुई है। तो हम लोग ये चाहते हैं, भारतीय मजदूर संघ के लोग पूरे देश भर के अंदर केंद्र सरकार एक सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड देश के 35 से 40 करोड़ लोगों के लिए लागू करे, और एक इनके लिए स्पेशली कैटेगरी के अंदर हर स्टेट के अंदर एक मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्त करे जाएं, जो इनके गलत तरीके से पुलिस इनके साथ व्यवहार करती है, चालान करती है। तो अभी तक तो ये सुविधा है नहीं, तो एक मजिस्ट्रेट की भी, मतलब स्टेटों के अंदर मजिस्ट्रेट भी होने चाहिए, एक आयुक्त बनना चाहिए कोर्ट की तरफ से इनके लिए। భారత్ మాతా కీ జై. నా పేరు చింతల నందకిషోర్, భారతీయ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆటో అండ్ ట్యాక్సీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుని. ఈరోజు 2 రోజుల నుంచి గట్కేసర్లోని అన్యాజుగూడలో ఆర్వీకే విద్యా కేంద్రంలో ఈరోజు ఆఖరి రోజు. ఇందులో కొన్ని తీర్మానాలు చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి భారతదేశంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ సంక్షేమ బోర్డులు డ్రైవర్ల కోసం ఏర్పాటు చేయడం. రెండోది ఏంటంటే ఓలో, ఊబర్ బైక్లను తొలగించాలని చెప్పి, రద్దు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్లు చేస్తూ, మరియు దేశం మొత్తం మీద ఉన్న ఏదైతే 20 కోట్ల డ్రైవర్లకు నేషనల్ హైవేలో వారికి తగిన భద్రత గురించి, మరియు వారికి రెస్ట్ రూమ్స్ కానీ, మరియు వారికి సంబంధించిన ఆరోగ్య భద్రత, మరియు వేరే కారణాల వల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బందులు జరిగితే వెంటనే పోలీసులు వెంటనే స్పందించే విధంగా, దాంతోపాటు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఏదైతే మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 30 లక్షల మంది ఆటో డ్రైవర్లు రోడ్డుపై రావడం జరిగింది. వాళ్ళందరి భవిష్యత్తును కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాలరాస్తుంది. కానీ వెంటనే దీన్ని వెంటనే వాళ్ళు ఏదైతే ప్రకటించారో సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు మరియు సంక్షేమ బోర్డు ఈ ఓలో, ఊబర్ బాక్స్లను తొలగించడం, మరియు డ్రైవర్లకు ఏదైతే సంక్షేమం గురించి కానీ వాళ్లకు ఇన్సూరెన్స్ రేట్లను కూడా 50% తగ్గించే విధంగా, మరియు ట్యాక్సులు ఏవీ లేకుండా వారిని ఇచ్చే విధంగా. ఎందుకంటే సొంత వెహికల్, వాళ్ళు సొంత డబ్బులతో 5-6 లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఆ వెహికల్ను తీసుకొని వాళ్ళ జీవనాధారం వెళ్లకుండా ఎంతోమంది ఈ మహిళలకు ఉచిత బస్సు వల్ల ఎంతో ఇబ్బంది జరిగి వాళ్ళకు ఒక 50 మంది ప్రాణత్యాగం చేశారు, చనిపోయారు, ఆత్మహత్య చేసుకురు. వాళ్ళ కుటుంబాలకు కూడా 25 లక్షలు చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఏదైతే కార్యక్రమం బీపీటీఎంఎం జాతీయ సమావేశాలకు పెద్దలందరూ కూడా రావడం జరిగింది. రేపు రాబోయే రోజుల్లో డ్రైవర్ల గురించి, సంక్షేమం గురించి పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వాలపై
ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతుంది కనుక ఇప్పుడే హెచ్చరిస్తున్నాం. డ్రైవర్ల సంక్షేమమే మా సంక్షేమం కనుక మేమందరినీ కోరడం ఏంటంటే భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్లో కార్యకర్తగా చేరండి. భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ ఏదైతే ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగాన్ని కట్టుదిట్టంగా బలంగా తయారు చేయాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు. भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की अखिल भारतीय 7वीं अधिवेशन हैदराबाद में हो रहा है कल से. ऐसा 18 प्रदेशों से इधर प्रतिनिधि आए हैं. इस देश में पूरा 10 करोड़ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है. ये वर्कर्स के लिए भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ BPTMM ने चालकों के संक्षेम और समस्या का समाधान के लिए लगातार 21 साल से इस देश में काम कर रहा है. और वर्तमान में भारत सरकार और इस देश में सभी प्रदेश सरकार ने चालकों के साथ बहुत जुल्म कर रहा है और आर्थिक शोषण भी कर रहा है. RTO हो, पुलिस हो और इंश्योरेंस कंपनियां सभी इनके पैसे के लिए और NHA भी इनके पैसे के लिए आमदनी के लिए देख रहा है, लेकिन इस चालकों के सुविधा और संक्षेम छोड़ दिया है. इस सरकार क्या कर रहे हैं मैं हम लोग पूछ रहा है. इसलिए दो दिन में आने वाले दिनों में सभी पूरे देश में 10 करोड़ की सभी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को सभी निजी परिवहन चालकों के लिए कल्याण बोर्ड होना चाहिए और इंश्योरेंस रेट 50% कम होना चाहिए और इस सभी चालकों के लिए ESI PF लागू होना चाहिए. ऐसा मुद्दे को लेकर हम योजना कर रहा है. और NHA में नेशनल हाईवेज में सभी भारी भारी ट्रक चलाते ऐसी लोगों के लिए एक सुविधा 100% सही करना चाहिए. प्राइमरी हॉस्पिटल, सब्सिडी कैंटीन और 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए. और रोड टैक्स, सोशल टैक्स, ग्रीन टैक्स, ऐसा सभी टैक्स, ये टोल टैक्स ये लेते हैं सरकार ने. इसीलिए और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का गाड़ी और अलग अलग टैक्स की रूप में एक कम है, एक बड़ा है एक स्टेट में, ऐसा नहीं होना चाहिए. टैक्स की जो सुविधा है भारत सरकार ने एक ही प्लेटफॉर्म में लाना चाहिए. 1 नेशन 1 टैक्स के नाते अगर 15 साल का गाड़ी जो स्क्रैप में होता है, जो भी ऑटो हो, सभी गाड़ी को लिए 15 साल से 20 साल करना चाहिए. और 20 साल के लिए अब जो भी टैक्स लेता है एक ही बार ले लिए एक कमर्शियल व्हीकलों के साथ. लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं. कभी शोषण करना, कभी पुलिस वालों का, ऑटो वालों का जुल्म चलते रहता है हाईवे में भी और शहर में भी. ये बंद करना. और रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण हो रहा है इस देश में. पूरा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की जो जब करते हैं ये केंद्र सरकार ने ये रेलवे जो विभाग है रेलवे मंत्रालय ये सोचना है हर एक रेलवे स्टेशन में टैक्सी और ऑटो चालक बिना पैसा बिना कुछ लेना नहीं चाहिए. एक गरीब चालक है, ये लोग को सुविधा करें. आप इसको सिस्टम करें, एक ID दे दे, पैसा नहीं लेना चाहिए. ये इसके लिए सुविधा भी होना चाहिए. ये नहीं करते हैं. अभी आजकल ये 5 स्टार होटल के ना जैसा ये रेलवे स्टेशन बनाते हैं, लेकिन पैसेंजर बाहर आने के बाद वो लोग की सुविधा कैसा मिलेगा ये विचार मिनिमम करना चाहिए. इसीलिए हम आने वाले दिनों में सभी ये मुद्दा लेकर सभी चालकों के संक्षेम और समाधान समस्या की जो समाधान करने के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं. आने वाले में दिनों में पार्लियामेंट के सामने हम लोग बहुत बड़ा धरना करने वाले हैं. सभी केंद्र सरकार से पहले हम लोग बात करने वाले हैं. जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता जो इसमें भी कुछ कानून हमारे थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, इसको भी बदलना चाहिए और इसमें सुविधा का इसको थोड़ा परिवर्तन अमेंडमेंट लाना चाहिए इस एक्ट में. इसके बारे हम लोग सड़क पे आने वाले हैं. इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और इस भारत में सभी प्रदेश सरकार हमसे बातचीत करें. ये हमारा डिमांड है. आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे. धन्यवाद. வணக்கம். நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி BMS ஹைதராபாத்தில் 7th ட்ரிப் ஆல் இண்டியா நேஷ்னல் கமிட்டி இன்றைக்கி இங்கே நடத்தியிருக்காங்க 12-13. இந்த டேட்டில் ஏகப்பட்ட கோரிக்கைகள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம டிரைவர்களுக்காக எடுக்கிறதுக்கு பேசியிருந்தாங்க. இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாமே எல்லா டாக்ஸி ஆட்டோ எல்லா டிரைவர்ஸுங்களும் வந்திருக்காங்க. நம்ம ஆல் இண்டியா நேஷ்னல் ஹைவே டிரைவர்ஸ் யூனியன் தேசிய அளவில் எல்லா மாநிலத்திலையும் பண்ணிட்டு வரோம். இங்கே இது
தெலுங்கானா ஒரு சேனல். ஆனால் இது இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய கமிட்டி எல்லா மொழியிலையும் பேசுகிறாங்க. முதல்ல வந்து நம்ம தேசிய அளவில் ஓட்டக்கூடிய நம்ம லாரி ஓட்டுநர்கள் வந்து பாதுகாப்பு கிடையாது. எங்கே பார்த்தாலும் போலீஸ்காரவங்க பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய போலீஸ்காரங்களே அடிக்கிறது, ஆர்டிஓ வந்து அடிக்கிறது, எல்லாம் ரவுடிகள் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. கூடுதலாக தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ரவுடி அராஜகம், போலீஸ் அராஜகம், ஆர்டிஓ அராஜகம். அதே மாதிரி மகாராஷ்டிரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா எல்லா பக்கமும் வந்து ரவுடி அராஜகம் வந்து அதிகமாயிடுச்சு. இதில் வந்து ஓட்டுநருக்கான பாதுகாப்பு கூறிய ஒரு சட்டத்தை வந்து இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வரணும். நேஷ்னல் ஹைவே டிரைவர் அப்படின்னாவே, நேஷ்னல் பர்மிட் ஓட்டக்கூடிய டிரைவர்னாவே அவங்களுக்கு ஒரே சட்டம் தான் இருக்கணும். முதல்ல உயிர் பாதுகாப்பு சட்டம். ஓட்டுநரை அடிக்கக்கூடாது. அந்த அடிக்கிற நபர் யாராக இருந்தாலும் அவங்க மீது வந்து சிவியர் ஆக்ஷன் எடுக்கணும், கடுமையான தண்டனை விதிக்கணும். அது அரசு துறை சார்ந்த நபர்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வெளிநபர்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை திருடனாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, இந்த தண்டனை வந்து அளிக்கணும். அதே போல் நம்ம எத்தனையோ டேக்ஸ் நம்ம வந்து அந்த இப்போ வந்து டோல்கேட்டில் வந்து நம்ம ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்டு, எப்படி சொல்லணும்னா ஆக்சிடென்ட், இன்சிடென்ட், பிரேக் டவுன், இதுக்கு வந்து 1033 வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இந்த டோல்கேட்டு அந்த லிமிட்டடில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுங்கச்சாவடி லிமிட்டடில் இருக்கக்கூடிய சாலைகளில் தான் வந்து திருட்டு, கொலை, கொள்ளை, வழிபறி எல்லாமே நடக்கிறது இந்த சுங்கச்சாவடி லிமிட்டில் இருக்கக்கூடிய சாலைகள் தான். ஹைவே பெட்ரோல்னு வச்சுருக்காங்க. அவங்க என்ன வேலை பார்க்குறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எதுவுமே தெரியல. ஆனால் ஓட்டுநருக்கு பாதுகாப்பே இல்லை. அந்த ஓட்டுநருடைய பாதுகாப்பு ஒரு சுங்கச்சாவடி நிறுவனத்துக்கு உட்பட்ட எல்லைக்கு உட்பட்ட ஏரியாவில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைக்கு உரிய இழப்பீடு அந்த சுங்கச்சாவடி நிறுவனம் தான் தரணும். இதை நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்த கோரிக்கையை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 4 அம்ச கோரிக்கை கொடுத்துருக்கோம். அதே போல் நம்ம வந்து ரோட் டேக்ஸ் கட்டுறோம், நேஷ்னல் பர்மிட் டேக்ஸ் கட்டுறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப்சி, இன்சூரன்ஸ், ஏகப்பட்ட டேக்ஸ் கட்டுறோம். இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் போன ஸ்பெஷல் டேக்ஸ், அது ஏகப்பட்ட ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம உள்ளே போகும்போது ஏகப்பட்ட டேக்ஸ் கட்டுறோம். ஆனால் அந்த டேக்ஸ் மூலமாக அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வருது. ஆனால் ஓட்டுநர்களுக்கு, வாகன உரிமையாளர்களுக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லை. அந்த அடிப்படையில் இந்த டேக்ஸ் வசூல் பண்ணக்கூடிய இந்த அரசாங்கம் ஒரு ஓட்டுநர் உரிமம் ஒரு புதுப்பிக்கும் போதும் சரி, புதிதாக அப்ளை பண்ணும் போதும் சரி, அவங்களுக்கான அந்த 15 லட்சம் ரூபாய்க்கான இன்சூரன்ஸ் தான் கேட்குறோம். நம்மளுக்கு முதலீடு கேட்கல, இன்சூரன்ஸ் கேட்குறோம். அந்த இன்சூரன்ஸை நம்ம அரசாங்கம் வந்து லைசன்ஸோடு ஆட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விபரீதம் நடக்கும்போது, தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் ஏதாவது நடக்கும்போது அந்த ஓட்டுநருடைய குடும்பத்திற்கு அந்த பணம் கிடைக்க ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது. இது அரசாங்கம் இதை உடனடியாக வந்து அமல்படுத்தணும். அதே போல் நம்ம ஓட்டுநர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த எலெக்ஷன் டைமில் வந்து ஓட்டு போடுறதுக்கான வாய்ப்பே இருக்கிறதில்ல. நம்ம ஓட்டு போடணும். நம்ம தான் இந்திய நாட்டின் குடிமகனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உரிமை ஓட்டுரிமை தான். ஆனால் அந்த ஓட்டு போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு கொடுப்பனை இல்லாமல் போயிடுது. சில பேர் ஊரில் இருந்துடுறோம், பல பேர் வெளி மாநிலத்தில், வெளி மாவட்டத்தில் இருந்துடுறோம், ஓட்டு போட முடியல. அந்த அடிப்படையில் அவங்களுக்கு, நம்ம ஓட்டுநர்களுக்கு வந்து தபால் ஓட்டு உரிமை, எந்த மாநிலத்தில் இருந்தாலும் தபால் ஓட்டு உரிமை வந்து அவங்களுக்கு அளிக்கப்படணும் அப்படிங்கிற இந்த கோரிக்கையை வந்து நம்ம பிபிடிஎம் பாரதிய பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட் மன்சூர் மகாசங்கில் வந்து கொடுத்துருக்கோம். அந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றிருக்காங்க. அது நிறைவேற்றினது மட்டும் இல்லாமல் விரைவில் டெல்லி பாராளுமன்றத்தில் இதை பற்றி பேச வைப்போம் அப்படின்னு வந்து வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக இது நடக்கும் அப்படிங்கிறத முழுமையாக நாங்கள் நம்புகிறோம். ஓட்டுநர்கள் நீங்களும் நம்புங்க. நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த்.